So let's get started towards question number 3 of the irrigation civil engineering MCQs. This is Engineer Azalbacha, project management specialist, construction management specialist, contract management specialist, and assistant RE. So the length of a meander is the distance along the river. So what is a meander? First of all, we have to talk about the meander. So what is a meander in irrigation engineering? So one thing is for sure that meander is a series of regular sinus curves, like it's a curves. All right, so these curves, you can see this is one curve, okay, and then this is sort of another curve. All right, this is another curve, this is another curve, this is another curve, this is another curve, right? तो ये हमारे साथ जो है ये कर्व्स होते हैं इन द चैनल ऑफ अ रिवर. तो अब अदर वाटर कोर्स, ठीक है, मतलब ये जो हमारे साथ जो चैनल गुजरती है, जो अभी एक इरिगेशन चैनल, दैट्स एन इरिगेशन चैनल, राइट, ओके, दैट्स ऑफ इरिगेशन. तो ये एक इरिगेशन चैनल है हमारे साथ, दैट्स एन इरिगेशन चैनल, राइट. तो meander is the distance along the river. It's distance, right? I mean, one thing is sure, this is a distance, okay. So like this is a distance, okay, between the tangent point of one curve to tangent point of the next curve of the same order, right? So you can see these are two curves, right? Like one is this curve and another is this curve, okay. So tangent point, this is a tangent point, so it can be possible to be there, it can be possible to here, it can be possible to here, right? So it can be possible even here as well. So that if similarly it can be possible here, possibly be here, possibly be here. So tangent point is actually top point of the curve, right? So that is a situation. So what this meander means that, so basically this is one curve, right? This is a one curve. So a meander is one of series of regular sinus curves in the channel of river or other water course, right? It's a series. So this is a meander. This is pattern is a meander pattern, right? Okay, so that can occur in channels and irrigation engineering. So a tangent line is a line that touches a curve at a single point and does not cross through it, right? The point where the curve and the tangent meet is called a point of tangency. So the length of the meander is the distance along the river between the tangent point of one curve and to the tangent point of next curve of the same order. Next curve, right? Next curve of the same order, right? So what is that distance? Is the distance between along the river between the tangent point of one curve and another curve. I'm show you. This is one tangent point, suppose, right? And this is another tangent point, okay. So what I'm going to do that I'm a little bit making some changes, and I'm making this color pinkish. So now, like if I can come here, and similarly if I can bring this, so this distance is actually the meander, because that's the distance between along the one tangent point of one curve and the tangent point of the another curve and the same channel across the irrigation channel or river, right? So that's a meander. All right, so the difference and level, right? So let me question number 6 to irrigation engineering. The difference in level between the top of a bank and supply level in a canal is called, okay. As you can see, if I'm talking about the freeboard, there are different aspects, like this is berm, okay, like this is filling, and this is bed of the canal, okay. This is the bed of the canal, this is the bed, this is the river bed, these are the side slopes of the canal, right? And
cutting is being initiated. This is a cutting, right? If I can highlight this portion, portion has been excavated, right? So this site distance with this point of the filling, right? And like this is the filling, and the berm is actually this side distance with the canal bed, right? And this is the FSL, right, across the same way. This is the bank, okay, this is the bank, but actually these are also the side slopes. These are also the side slopes. You can see the side slopes. That's a full cross section of a canal, right? And actually from the top of the bank to that FSL or NSL is the depth is called freeboard, right? This is called freeboard. So what is freeboard? The freeboard, the margin between FSL and bank level is known as freeboard. Like this is the bank level which जो हमारे पास किनारा होता है, ठीक है, और ये हमारे साथ FSL है या NSL है. NSL तो ये है और ये FSL है. FSL हमारे साथ NSL और जो हमारे साथ फिलिंग होती है और जो बैंक टॉप होता है उसका मिड पोर्शन होता है FSL, ठीक है, उसका मिड पोर्शन हमारे साथ FSL होता है. तो इन दोनों के दरमियान जो मार्जिन होता है, जो डेप्थ होता है, उसको हम फ्री बोर्ड कहते हैं, ठीक है. So the margin between FSL, NSL of course natural surface level, and this is FSL is finished surface level. Like this is basically the finished surface of level of the water inside flowing the canal. So from that depth to the bank to the side depth, our margin is known as freeboard, right? That's a capacity we have the freeboard, like that. If the water can be raised to the bank top level as well, which is this level, right? That's called the freeboard. So as indicating in this question number 6, that the difference in level between the top of bank and supply level in a canal is called what? That's called freeboard, right? That's the question number 6. That's a difference in level. Basically ये हमारे पास लेवल्स में डिफरेंस होता है. एक बैंक का लेवल होता है और एक जो फिनिश सरफेस लेवल होता है, जो सप्लाई लेवल होता है कनाल में जिस पे पानी जाता है, तो उसके मार्जिन को, डेप्थ को हम कहते हैं फ्री बोर्ड. Question number 8, the method to remove the waterlogging of land. For example, let me show you, courtesy to Agric Wagyu AU, this image. This is a waterlogging. Like you can see, this entire land is waterlogged. What is waterlogged? Having water table higher at top of the surface of the land, okay? And this condition is called anaerobic conditions, because the water is so in excess that it rises to the surface of the land, so it is waterlogged. So no raft, no isolated footing, and no other wall foundation is acceptable in this case, except of the pile foundation, because it's a so silty clay. It's such a silty clay, and this part of silty clay, it's a waterlogged, so it cannot be feasible for the raft, isolated footing, or any other foundations except of the pile foundation. And what kind of pile? That's geotechnical engineers will suggest us before the construction of a project. There will be a survey of geotechnical survey will be initiated by the department. So to remove waterlogging, to remove the waterlogging, the correct option is, to remove both C and A and B, right, to reduce percolation from canals. So what is now percolation? So I discussed with you the water. Now what is waterlogging? Okay. So I discussed with you what is waterlogging. So I'm going to cancel this, and so waterlogging is what I told you. So as you can see, waterlogging in irrigation engineering is excess water in the root zone. Like anywhere, if there's excess water in the root zone,
this it's water logging. In this case, you can see there's a excess of water, like in this location, it's the excess of water, right? And what are the root zone? I mean, inside this land there will be roots. So from those zones, from those roots, that water come out on top of the surface of the ground. So excess of water in the root zone, right? So that is accompanied by anaerobic action. That's my point number 2. All right, this is my point number 2. I mean, what is anaerobic action? Well, it's a kind of that action. It's a kind of that action when the water from the root zone come out at top of the land, ground, and it accumulates and spread out at top of the surface of the ground field. So let's get an aerobic action, an aerobic process, right? So it's good. Why? It's not good, but why? Now with the point number 3, the excess water inhibit gaseous exchange with the atmosphere. So what does it mean? So the excess water inhibits the gaseous state, right? The excess water exhibit the gaseous exchange, right, with the atmosphere. So then the gaseous exchange sort of exchange where these water will evaporate from the surface of the ground, right? No, तो ज़मीन से ये पानी फिर उठ जाता है, ठीक है, जब उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है. Biological activity uses of available oxygen in the soil, right? So इससे क्या मतलब है? मतलब जो हमारे साथ जो biological activities होती हैं, ठीक है, point number 4 water logging, तो इस पे जो अवेलेबल ऑक्सीजन होता है सॉइल में उसको यूज़ करती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है. और इन द सॉइल एयर, मतलब सॉइल में आपके पास बबल्स होते हैं ना, ठीक है, गैप होता है. सॉइल जिस तरह नहीं होता ना कि पूरे पार्टिकल्स आपस में मिलजुल हो जाते हैं, ठीक है, और उस पर ज़रा भी गैप नहीं होता. नहीं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो अवेलेबल ऑक्सीजन को यूज़ करती है, ठीक है. वो क्या करती है, वो जो सॉइल में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होता है उसको वो इस्तेमाल करती है फुली, ठीक है. जो सॉइल में जो एयर होता है उसको इस्तेमाल करती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है. जो सॉइल में जो आपके पास एयर होता है ना, तो उसको इस्तेमाल करती है. एंड वाटर, और जो सॉइल में जो पानी होता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो एवापोरेट हो जाते हैं. इसको एनारोबिसिस भी कहते हैं, ठीक है, एनाक्सिया भी कहते हैं, और ऑक्सीजन डिफिशिएंसी भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास सॉइल से जब ऑक्सीजन चला जाता है वो डेफिशिएंट होता है, तो उसको ऑक्सीजन डिफिशिएंसी भी कहते हैं. वाटर लॉगिंग में हमारे पास ऑक्सीजन डिफिशिएंसी भी होती है, सॉइल के पार्टिकल में जो एयर और पानी होता है वो भी चला जाता है, ठीक है, ऊपर. और इसको हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज, मतलब गैसों का तबादला. जो एक्सेस वाटर होता है क्योंकि वक्त के साथ तो ऊपर चला जाता है, लेकिन इस तरह भी हमारे साथ ज़मीनें होती हैं जिसमें हमारे पास पानी काफ़ी महीनों तक, दिनों तक, हफ्तों तक पड़ा रहता है, ठीक है, सालों तक भी होता है, डिपेंड्स. तो वाटर लॉगिंग टू रिमूव वाटर लॉगिंग लैंड, मतलब ज़मीन से वाटर लॉगिंग रिमूव करने का क्या तरीक़ाकार होता है. तो इससे हमारे पास जो कैनाल्स होते हैं उससे पर्कुलेशन भी कम हो जाती है एंड वाटर कोर्सेस भी कम हो जाता है कैनाल से, ठीक है. और इसमें जो ग्राउंड में जो आउटफ्लो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर. जो ज़मीन में जो वाटर रिजर्वायर होते हैं, चाहे कुदरती रिजर्वायर होते हैं या जो मैन मेड होते हैं, तो उससे भी फ्लो जो है क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर हम वाटर लॉगिंग को रिमूव करें, the measure to remove water logging, ठीक है. That's irrigation engineering for you, right? That's the correct answer. Number C. About civil.org presents this canal. This is irrigation canal. So irrigation canal are used to provide the water from a source, which may be a reservoir or dam, to different other fields, irrigation fields, and different other purposes, right? तो ये कनाल है हमारे पास, दिस इज़ अ कनाल. सो व्हाट इज़ पर्कुलेशन फ्रॉम कनाल, ठीक है. देखिए, किसी भी ज़मीन से पानी निकालना, इसको टू रिमूव वाटर लॉगिंग कहते हैं.
तो वाटर लॉगिंग करने से क्या होता है हमारे साथ, कैनाल से पर्कुलेशन कम होती है। ये कैनाल है, इससे पर्कुलेशन कम होगी। पर्कुलेशन क्या मतलब है, मतलब ये कैनाल है, रेफरेंस एफ 21, ये कैनाल है, ठीक है। इस कैनाल से पर्कुलेशन कम होती है। तो पर्कुलेशन फ्रॉम कैनाल मीन पर्कुलेशन लॉस इन चैनल्स, चैनल्स जो है इससे पर्कुलेशन, इसको पर्कुलेशन लॉस इन चैनल भी कहते हैं। इन पर्कुलेशन लॉस द वाटर इज लॉस्ट थ्रू अ कंटिन्यूस जोन, एक कंटिन्यूस जोन से पानी कम होता है कैनाल से। दैट इज फॉर्म बिटवीन द कैनाल एंड द वाटर टेबल, कैनाल और जो वाटर टेबल होता है, ठीक है, उससे बनता है। दिस जोन कंटेन फुली सैचुरेटेड सॉइल, इसमें सॉइल होता है विच एस्टैब्लिश अ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम द कैनाल, जो कैनाल से हमारे साथ जो पानी लॉस होता है तो हो जाता है ज़मीन में, ठीक है। तो फिर ये सॉइल जो होता है फुली सैचुरेटेड सॉइल होता है जो कि कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो बन जाता है। तो इस तरह हमारे साथ ये ज़मीन के सरफेस पे आ जाते हैं और ये लॉस हो जाते हैं। तो जॉइन द ग्राउंड्स वाटर रिजर्वायर, तो वो फिर नीचे चले जाते हैं रिजर्वायर में, जो नेचुरल रिजर्वायर्स होता है, ठीक है। तो दैट्स अ पर्कुलेशन फ्रॉम कैनाल। In percolation, there exists a zone of continuous saturation from canal to water table and direct flow is established. मतलब हमारे साथ एक एग्जिट बन जाता है, एग्जिस्ट बन जाती है। A zone of continuous saturation from canal, कैनाल से पानी नीचे जाता है to water table and direct flow is established, direct flow बन जाती है, ठीक है हमारे साथ। I have on this spotlight, you can see कि आपके पास इस तरह होता है ना कि ये स्पॉटलाइट में आप देख सकते हैं कि नीचे से कैनाल के बेड से सीप जो होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कैनाल में जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है, ज़मीन में जाता है, तो नीचे जो नेचुरल अंडरग्राउंड होते हैं, नेचुरल रिजर्वर, वो भी भर जाता है, ठीक है। और ऊपर से एवोपोरेशन होती है, ठीक है, कुछ पानी नीचे चला जाता है और कुछ ऊपर चला जाता है, तो एवोपोरेशन हो जाती है। इसको कहते हैं लॉसेस ऑफ वाटर इन कैनाल्स, ठीक है। तो इस तरह कैनाल सूख जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको कहते हैं पर्कुलेशन, राइट। सो लेट मी शो यू इन बैक टू माय क्वेश्चन एमसीक्यू। तो जो वाटर लॉगिंग को रिमूव करने का मतलब है ज़मीन से कि हमारे पास जब हमारे पास ज़मीन से जो वाटर लॉग ज़मीन होती है जब वो खुश्क हो जाती है, जिससे वो पानी एक्सेस वाटर चला जाता है, तो ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है। इसका मेयर क्या होता है, इसका मतलब है कि कैनाल में पर्कुलेशन होता है कैनाल से, और जो दूसरे वाटर कोर्सेज होते हैं छोटे छोटे, मैं वाटर कोर्सेज भी दिखाता हूँ आपको। अब एक वाटर कोर्स है, ठीक है, मतलब ये छोटे छोटे जो इस तरह रास्ते चले जाते हैं, इसको हम वाटर कोर्सेज होते हैं। अक्सर इसको हम गाँव वगैरह में अमूमन देखते रहते हैं खेतों में, क्योंकि जो हमारे पास मेन कैनाल होता है, जो सोर्स होता है, जो डैम होता है, जो रिजर्वायर होता है, उससे पानी जाता है कैनाल्स में और channels में। What is the difference between canals and channel? That's a homework for you guys. Just go there and give a comment section. Reply me there. तो जो हमारे पास जो canals होता है, जो channels होते हैं, उससे फिर सब डिस्ट्रीब्यूटिव छोटे छोटे channels होते हैं, तो इसको वाटर कोर्सेज कहते हैं। तो जब ज़मीन से हमारे पास जो वाटर लॉक होता है, एक्सेस वाटर चला जाता है, तो इससे पर्कुलेशन होती है हमारे साथ कैनाल में। कैनाल से भी पानी चला जाता है, सीपी जो होती है नीचे भी पानी चला जाता है, कुछ इवेपोरेट होता है और वाटर कोर्सेज भी सूख जाते हैं। इस तरह टू इंक्रीज आउटफ्लो फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर, और जो जाहिर सी बात है जब सीपी हो जाती है तो नीचे पानी चला जाता है, तो नीचे जो रिजर्वायर होते हैं तो उसमें भी आउटफ्लो पानी का बहाव जो है वो तेज़ हो जाता है। तो दिस इज question for you. Let me move towards one another question before closing this, and we'll have discuss some project management, construction management. Question number 10 says, say the retrogression of the bed level of a river downstream aware occurs due to heavy impact of water, increase of the bed level, less percentage of silt and soft soil strata. So the correct answer is less percentage of silt. But what is retrogression of the bed level first? We'll discuss that. That's our last question for today's topic. देखिए, सबसे पहले हम वेयर पढ़ते हैं। अक्सर इंजीनियर जो है बड़े बड़े तनख्वाह बड़े बड़े पोस्टों पे होते हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता कि वेयर और बैराज में क्या फ़र्क है। वेयर हमारे पास इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, ये लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है हमारे साथ, दैट इज़ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर और कैनाल। देखिए, रिवर बड़ा होता है, कैनाल रिवर से होके आता है, तो दोनों के सामने ये ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है, रुकावट
टू रेज द वाटर लेवल, वाटर लेवल को रेज करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक ऑब्स्ट्रक्शन बनाते हैं तो पानी उस पे जमा होता है, पानी तो एक ही लेवल से जाता है। तो अगर आप उसके सामने ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ से अगर मैं ऊपर देखूँ, यहाँ से पानी कंटिन्यूस फ्लो में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये मैं यहाँ से लेके ये यहाँ से ये लेके यहाँ से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ से नीचे बना हुआ है। सपोज लेट्स से ये इसकी हाइट है, लेट्स से मेरे पास इसकी हाइट है से 20 फुट मिसाल के तौर पर, या से 10 फुट या 15 फुट कर लें, ठीक है। इसकी हाइट है 15 भी नहीं है तो से 12 फुट कर लें, 15-12 फुट कर ले इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो इसकी ये जो हाइट है हमारे साथ, ठीक है, चाहे जितनी भी हो, 15 फुट कर ले, 10 फुट 12 फुट कर ले, 15 फुट कर ले, जो भी है, इसके सामने जब हम ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, तो ये पानी देखिए लेवल में आ रहा है, ठीक है। ये पानी एक लेवल में आ रहा है, तो ये इसके तो ये इस स्ट्रक्चर की वजह से ये पानी नीचे से रेज हुआ है, ऊपर हुआ है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर हटा दूँ यहाँ से, तो ये जितना पानी यहाँ पे जमा हुआ है ये नीचे गिर जाएगा। तो ये जो इसका ये पानी का लेवल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हमने ऊपर किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को पानी उठ जाता है, ऊपर हो जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऑब्स्टिकल जो कि पानी के लेवल को ऊपर करने के लिए हम बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेयर। मतलब अब अगर मैं देखूँ ये पानी है, ठीक है, ये पानी मुसलसल हमारे साथ, ये पानी यहाँ से इस तरह फ्लो कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन से ये पानी जा रही है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है पानी की, तो ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर ने यहाँ पे जो पानी जमा है इसका लेवल ऊपर किया हुआ है। तो लेवल ऊपर करते तो इसके ज़रिए हम पानी क्या करते, नीचे गिरता है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक, मुख्तलिफ एरियाज़ में, हर जगह पे जाता है जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो टू रेज वाटर और इन पैरेलल टू डाइवर्ट द वाटर, कभी कभार इससे हम पानी को डाइवर्ट भी करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ वेयर आर यूज्ड टू कंट्रोल फ्लो। इससे हम फ्लो, पानी के बहाव को भी कंट्रोल करते हैं। और 2 किस्म के होते हैं, इसको कहते हैं इन स्ट्रीम वेयर, जिसको एक मेन हो इन स्ट्रीम रिवर होता है, दूसरा डाइवर्जन रिवर होता है। डाइवर्जन तो नाम से ज़ाहिर है कि पानी को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ करता है। और जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई, ये इन स्ट्रीम वेयर है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पे वेयर की बात हुई है कि रेट्रोग्रेशन ऑफ द बेड लेवल ऑफ अ रिवर, मतलब रिवर के बेड लेवल में रेट्रोग्रेशन जो है, और वो भी डाउन स्ट्रीम अवेयर, वेयर से डाउन स्ट्रीम अकर्स होती हैं, किस वजह से, तो लेस परसेंटेज ऑफ सिल्ट रेट्रोग्रेशन हमारे साथ होती है। काफ़ी इंजीनियर जो है बड़े बड़े तनख्वाहें लेते हैं, उनको बैराज का भी पता नहीं होता, गवर्नमेंट पोस्ट पे होते हर जगह पे, कि बैराज जो है हमारे साथ क्या है, ये टाइप ऑफ लो हेड डाइवर्जन डैम है तो डैम, लेकिन लो हेड डाइवर्जन डैम है, विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लार्जर गेट्स, जिसमें हमारे पास गेट्स होते हैं, दैट कैन बी ओपन और क्लोज टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू। देखिए डैम तो हम बनाते हैं बिजली पैदा करने के, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बैराज जो हैं, बैराज में हमारे साथ गेट्स लगे होते हैं, और ये भी डैम की किस्म होती है, लेकिन डाइवर्जन डैम होती है, और वो गेट्स ओपन भी होते हैं, खुलते भी हैं, और इससे हम पानी के अमाउंट ऑफ वाटर को जो उस गेट से पास होते हैं उसको कंट्रोल भी करते हैं। ज़्यादा पानी चाहिए ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, कम पानी चाहिए कम पानी छोड़ते हैं, डिपेंड्स अपॉन द Q6 or Qmix, the amount of unit used by the irrigation department. This allows the structure to regulate and stabilize river water. इससे हम पानी के बहाव को रेगुलेट भी करते हैं,
स्ट्रक्चर टू रेगुलेट, मतलब पानी दरिया रिवर में जो पानी होते हैं उसको हम कंट्रोल में लाते हैं, उसको हम फिर बहाते भी हैं और उसको हम स्टेबलाइज भी करते हैं, उसको हम कंट्रोल भी करते हैं। एंड टू स्टेबलाइज रिवर वाटर एलिवेशन अपस्ट्रीम फॉर यूज इन इरीगेशन एज अ सिस्टम, और इसको फिर हम इरीगेशन के लिए और जो हमारे फसल वगैरह होते हैं या जो हमारे जो मतलब जो हमें ज़मीनें होती है, सरखेज़ ज़मीनें होती है या जो दूसरे हमारे सिस्टम होते हैं इरिगेशन रिलेटेड, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं बैराज को। ठीक है, बैराज है। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ से पानी की बहाव होते हैं, देखिए यहाँ से नीचे पानी होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये गेट्स जो हैं, ये गेट्स ओपन होते हैं और इसके हम अपनी मर्ज़ी से जो यहाँ से जो पानी आता है यहाँ से वो रिवर से आता है, तो ये गेट्स हम अपनी मर्ज़ी से ओपन क्लोज़ करते हैं। इससे हम जो दरिया का पानी होता है उसको हम कंट्रोल में करते हैं, इसको बहाते भी है, इसको हम इरीगेशन दूसरे कैनाल्स में भी हम पहुँचाते हैं, चैनल्स में भी पहुँचाते हैं, वाटर कोर्स में भी पहुँचाते हैं और इरीगेशन सिस्टम के लिए। तो इससे हम पानी की मकदार को भी कंट्रोल करते हैं और डाइवर्जन के लिए भी यूज़ करते हैं। और बैराज वेयर से बड़ा होता है, वेयर छोटा होता है वाटर रेस करने के लिए, और उससे भी हम पानी की मकदार को जो है कंट्रोल करते हैं। बट बैराज इज सॉर्ट ऑफ बिगर इन टर्म्स ऑफ वेयर, और इससे हम पानी की बहाव कंट्रोल करते हैं, डाइवर्जन भी करते हैं और दूसरे चैनल्स कैनाल्स को भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दैट्स आल्सो बैराज, राइट। इसकी डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये भी हमारे साथ बैराज है। ठीक है, यहाँ से भी गेट्स हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, इससे हम पानी की बहाव कंट्रोल करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, दरिया के पानी को रेगुलेट भी करते हैं, स्टेबलाइज भी करते हैं, दूसरे किनार्स को प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो रेट्रोगेशन जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये बेड लेवल रिवर के बेड लेवल में होती है और द वाटर फ्लोइंग थ्रू द बैराज हैव लेस सिल्ट। जो बैराज से जब पानी गुजरता है तो उसमें सिल्ट कम होती है। मतलब सिल्ट क्या है, सॉइल की किस्म है। ठीक है, एक सिल्टी सॉइल होता है, एक सैंडी सॉइल होता है, एक क्लेई सॉइल होता है, एक सैचुरेटेड सॉइल होता है, एक अनसैचुरेटेड सॉइल होता है। ठीक है, एक सॉफ्ट सॉइल होता है, एक हार्ड सॉइल होता है, सॉइल की मुख्तलिफ किस्में। सो वाटर पिक्स अप सिल्ट, अपने साथ सिल्ट ले जाते हैं। ठीक है, मैं आपको सिल्ट की पिक्चर दिखाता हूँ। मतलब ये अब दरिया आप देख सकते हैं ना, इसमें आपके पास ये सिल्ट है। ठीक है, ये सूखा हुआ एक दरिया है, इसमें जो दरिया में जो सॉइल मिट्टी होती है उसको हम सिल्ट कहते हैं। ठीक है, द रिवर सॉइल इज कॉल्ड सिल्ट, राइट। इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब सिल्ट आपके पास क्या है, ये एक सॉलिड या डस्ट टाइप सेडिमेंट होती है जो कि पानी, आइस या दूसरा विंड अपने आप के साथ ट्रांसपोर्ट करते, डिपॉजिट करते। ठीक है, इसका साइज़ कितना होता है, ये आपके साइट में जितने जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं उनसे आप पूछ लें और कमेंट सेक्शन में आप लिख लें। तो ये बनता है रॉक से। सिल्ट इज़ मेड अप रॉक एंड मिनरल पार्टिकल दैट आर लार्जर देन क्ले। मतलब सिल्ट की जो पार्टिकल्स है वो क्ले पार्टिकल से लार्ज होते हैं, क्योंकि क्ले स्टिकी होता है, जैसे चकड़ खली पर क्ले के जो कम देखवाच वन खली। और सिल्ट में आपके पैर नहीं फंसते क्योंकि सिल्ट की पार्टिकल्स क्ले पार्टिकल से बड़े होते हैं, बट स्मॉलर देन सैंड। देखिए आपके पास एक सैंड होती है, एक आपके पास क्ले होती है, एक आपके पास सिल्ट होती है। सिल्ट जो है उसके पार्टिकल्स क्ले से बड़े होते हैं लेकिन सैंड से छोटे होते हैं। इसका मतलब है कि सैंड और क्ले के बीच में सिल्ट होती है। इंडिविजुअल सिल्ट प्रैक्टिसेस आर सो स्मॉल दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू सी। ठीक है, लेकिन जितनी भी आपके पास जो दरियाएँ होती है वो अपने साथ जितनी भी जो दरियाएँ होती हैं आप ये अपने साथ सिल्ट ले जाती है, जैसे मैंने आपको पिक्चर में बता दिया। ठीक है, ये बेसिकली एक सैंड है, एक सिल्ट, एक क्ले। मैंने कहा कि क्ले सिल्ट के जो पार्टिकल्स है कितने होते हैं आप अपने जियोटेक इंजीनियर लैब टेक्नीशियन से पूछेंगे। ठीक है, लेकिन जो सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले से बड़े और सैंड से छोटे होते हैं। एक सैंड होती है, एक सिल्ट होती है, क्ले होती है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल।
तो रेट्रोग्रेशन में पानी जो है वो बहाव करता है, वो बैराज से जाते हैं। द बैराज हैव लेस सिल्ट, बैराज में आपके पास सिल्ट कम होती है, सो वाटर पिक्स अप सिल्ट, पानी जब बैराज से गुजरता है तो अपने साथ सिल्ट लेके जाता है फ्रॉम डाउन स्ट्रीम बेड, मतलब ऊपर से नीचे जाता है तो डाउन स्ट्रीम बेड में ले जाता है। दिस रिजल्ट इन लोअरिंग डाउन स्ट्रीम रिवर बेड, तो नीचे जो एक अपर स्ट्रीम होता है, एक डाउन स्ट्रीम होता है, तो अपर स्ट्रीम बेड और डाउन स्ट्रीम बेड के बीच में बैराज होती है, सेवेयर होती है, तो उसमें जब पानी नीचे गिरता है तो अपने साथ सिल्ट लेके आता है, तो इससे जो नीचे जो डाउन स्ट्रीम बेड है उसका लेवल, रिवर बेड का लेवल वो क्या हो जाता है, कब हो जाता है, लोअरिंग कब हो जाती है, वो मजीद नीचे चला जाता है, तो कुछ दिस इज नोन एज रेट्रोग्रेशन, ठीक है। Progressive retrogression or degradation of the downstream river and level is a result of construction of weir, तो ये बैराज जो वेयर की वजह से होते हैं, causes lowering of the downstream river stages, which has to be suitably accounted for in the design of downstream system. Retrogression is primarily due to the soil erosion. ऊपर से सॉइल नीचे जाता है तो वो जब नीचे बेड के साथ टकराते हैं तो उधर भी हमारे पास क्या होता है, सी पे इरोजन हो जाती है और बेड में हमारी दरार आ जाती है, तो वो पानी नीचे जाता है, तो बेड लेवल, बेड जो है वो नीचे जाता है, वक्त के साथ साथ नीचे जाता है, ठीक है। एंड कॉरिस्पॉन्ड टू अ फिनोमेना वेयर सक्सेशन रिवर्स द लैंड टू इट्स नेचुरल फिजिकल स्टेट, तो जो ज़मीन पहले जिस तरह होती थी फिर इसको हमने बाद में बनाया होता है, दोबारा ज़मीन उसी स्टेज में चली जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है कि इसमें हमारे पास जो वकास वेयर है एक, ठीक है, ये इसमें ये वादी शाम में है, बेड लेवल हैज़ ड्रॉप्ड बाय सेवरल मीटर्स, बेड लेवल्स पहले हमारे पास ये था, ठीक है, पहले ये था मेरे पास बेड लेवल, ठीक है, ये ऊपर वेयर है, ठीक है, ये स्पर है, स्पर कैसे कहते हैं मैं स्पर समझाता हूँ, और बाद में बेड ये आ गया, ठीक है, तो इसमें इतना गैप आ गया, ठीक है, ये गैप है, इट मे बी काज बाय वेयर, या इस सैंड की वजह से, वेयर की वजह से, या ग्रेवल एक्सट्रैक्शन की वजह से, अ फर्दर ड्रॉप एक्सपोज द साइफोन, अगर मजीद यहाँ पे ये ड्रॉप होता है तो ये एक्सपोज करेगा इस सरफेस को, ठीक है, वेट। तो एज यू कैन सी ये एक स्पर इज कंस्ट्रक्टेड हियर, first the bed level was there, then it was came and it was dropped that due to it might be the case that due to wear or sand gravel extraction, इसकी वजह से बेड लेवल में फ़र्क आ गया, ठीक है। स्पर आपके पास ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास स्पर्स हैं, स्पर्स को हम प्रोवाइड करते हैं क्यों, इसकी मेन वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। दैट प्रोट्रूड इनटू द रिवर, ठीक है, it keep the flood water away from the banks, right? As you can see, these are spurs, right? These sort of structures which are constructed, let me show you, these structure which are consisting, it's a, it's steps is given in this case, right? So it is basically constructed in transverse direction, right? It is also called groinus, right? Groinus. So spurs are groinus are structures. These are structures constructed from the stones. You can see some of the stone pitching are also laid over here, like that's the stone pitching. If the river of flood water come here, so it will strike over here. That's the top level. That's the top level of a sort of bank. It's this level. Look at the difference between these two levels. If I can extend this line, and if I can extend this line, there's a huge difference in the heights. So I will remove that. So spurs are the structures placed transverse to the river flow in this direction. If I can talk about the directions, the river water flow in this way. So it is placed transverse, like the spur direction is this and the river is going this direction. So it's sort of create a degree angle of 90 degrees. If I can extend this thing and if I can extend this thing, so
I mean a 90-degree angle will be made like this case, and this 90-degree angle, because here, for example, in this direction and this direction, of course there will be a 90-degree angle, right? So as spurs are placed transverse to the river flow, right, and extend from the bank to the river, right. यानी इससे हमारे साथ ये जगह भी एक्सटेंड हो जाती है, रिवर इधर है और ये बैंक से किनारे से, मतलब किनारा पहले या तो ये इतना एक्सटेंड हो गया है किनारा, ठीक है, किनारा एक्सटेंड हो जाता है रिवर तक, तो इससे स्पर्स प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है. तो स्पर्स का कॉन्सेप्ट भी हो गया, राइट. Retrogression from the bed level of a river downstream where occur due to less percentage of silt. The silt from the upper stream comes to downstream through where a barrage and causing that bed level down. So it's called retrogression of the bed level of a river. So Engineer Azobacha officially sign out. I will see you saying, give me lots of prayers, and inshallah I'll catch you guys in next session very soon in irrigation engineering. Thank you so much.